Hello, good evening. Guys, so can everyone hear me? Please type yes if you can hear me. Hello, hello. All right, I'm just looking at the chat box here. Super. Let me just bring this here. I think this is much better. Super, super. All right. So let's begin. It's going to be not a very long session because what I've done is मैंने क्या किया है कि मैंने एक तो एंड ऑफ वीक स्कैन के स्टॉक्स को और मिनिमाइज कर दिया, तो इसका मतलब जो एकदम शॉर्ट है उसको हम लिस्ट पे रखेंगे, वरना हम वी मूव ऑन, वी डोंट डू डेली आर्ली काइंड ऑफ थिंग. यू कैन डू इट योरसेल्फ. आई थिंक आप अब इतना केपेबल हो गए हैं कि आप वो कर सकते हो. तो एकदम जो शॉर्ट एकदम बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. Second, of course, we're going to discuss about 8 to 9 stocks for this year. तो जब मैं एंड ऑफ मंथ स्कैनिंग कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हमने बातें की थी, जिनके वीडियोस अभी भी हमारे चैनल पे है, जो बहुत बढ़ चुका है. सो देयर इज नो एंट्री अपॉर्चुनिटी देयर, बट येस ऑफ कोर्स जब वो री एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा तब हम विल पाउंस ऑन इट. But till then, of course, we've got few stocks that we're gonna talk about, and we're gonna talk about few end of month scan stocks, which is basically long-term investment stocks as well. Okay, so let's begin. I think we're all here. Let's begin. All right, guys. So let's start with end of week analysis. ठीक है, तो मेरे पास 8 stocks हैं यहाँ पे. Okay, only 8 stocks. जैसे मैंने बोला, we've इसको पूरे अच्छी तरीके से जो एकदम लगता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको बहुत सिंपल कर देते हैं. लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने नोटिस किया कि हम, बिकॉज द लॉट ऑफ ड्राइव पीपल हियर, वी जस्ट गो वेरी क्विकली ओवर इट विदाउट एक्सप्लेनिंग अ लॉट. तो मुझे लगा कि इस बार क्योंकि हमारे पास कम स्टॉक्स हैं, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ बात कर सकते हैं. सो मंथली चार्ट ऑफ कोर्स फेली न्यू, ऊपर गया फिर नीचे आया, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया, नीचे ईएमए पे है. ऑफ कोर्स प्रीवियस मंथली कैंडल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट और दैट ग्रेट, बट हेंस वी गो ऑन टू द वीकली चार्ट. ठीक है, इंडिया मार्ट इंटरमेश में. सो अगर मैं एक एक करके बनाता हूँ आपकी लाइंस. सो if I draw this line, right, look at this. So one, this is like a dynamic resistance line जो कि टूटा होगा, and then support, change in polarity, and then support which seems like a false breakout. Okay, अभी यहाँ पे क्या है, there's a bullish harami candle, and if the prices go higher, if the momentum is on the upside, then there's an opportunity on the upside. Okay, so what I'm trying to say is this becomes, इतना सा जो निकला हुआ है false breakout बन जाएगा, and ये kind of ऐसा move देगा. Alright, so अगर मैं एक और लेवल जाऊं और इसको मैं हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई करूं, सो यू सी देयर इज अ नेकलाइन हियर. सो शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये नेकलाइन पे बुलिश डाइवर्जेंस. तो जैसे मैंने कहा, अगर इसका हाई टूटता है, बुलिश हरामी का हाई टूटता है, तो ये ऐसा मूव अपसाइड होगा, विच इज अ रिजेक्शन ऑफ अ हेड एंड शोल्डर ऑल्सो. ओके, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज इन फॉर अस. अब मैं डेली चार्ट में जाते हैं हम लोग. So let's discuss this as well. So you can see here, right, it's a beautiful like breakout हुआ, change in polarity हुआ, ऊपर गया. Now again support पे आया. यहाँ पे there was not good enough divergence, went up, came back here. Again there's no daily divergence, but there's a weekly divergence which is much more important. तो as I said कि अगर कोई gap up या ऐसा कुछ खुलता है, then that is preferable
for us. Okay, and even if I draw like a channel, I think this fits in a channel also. So 0 1 2 3 3 पे divergence and then going up. So you want prices to open gap up or something and break this channel on the upside. ठीक है, हम hourly chart पे नहीं जा रहे. This is what we are doing right now. Okay, ठीक है. फिर हम खोलते हैं. So India Mart intermesh is a decent setup, I think, because of the weekly bullish divergence that we have. फिर हमारे पास आता है JSW Steel. JSW Steel monthly chart है. Month में nothing really, it's just, in fact, let's see if I can draw this. Will this be justified? Maybe weekly chart में आएंगे तब बनाते हैं इसको एक wedge. फिर हम weekly chart पे आते हैं. Weekly chart में at EMA, ठीक है. Last week hammer बना था, इस बार भी वैसा ही candle बना है, which means there is a possibility that it can go higher. Now, of course, we can draw these. जैसे मैंने बोला कि if we can find a range, it's always advisable कि हम बना के रखते हैं, जैसे हमने बैंक निफ्टी में बनाया था उस समय, ठीक है, to check what's going to happen. So I think this is probably something I would have drawn, but it doesn't make sense, यहाँ मैं price काट रहा हूँ, so I'll remove that. ठीक है. Anyway, so I'll come to the daily chart now. And ये list पे इसलिए है क्योंकि daily में there was a bullish divergence and then a 012 probability. Okay, probability है ये 012 होगा, तो इसके लिए something like this here. Okay, but without the divergence. This is with the divergence. So ये एक possible है. Again, it has to break like certain levels. तो उसको discuss करने के लिए हम hourly chart खोलते हैं, क्योंकि I think there'll be more clarity here. ठीक है, and let me draw this. So if you see somewhere here, this is a zone which acted as support, came back, resistance, maybe it breaks here and comes back to these levels, and if it breaks, then of course it can go higher as well. But again, people who know how to do this, plot your CPR, guys, they become very important. So India Mart का setup better है because weekly में है. इसका setup इतना अच्छा नहीं है. So for example, अगर कोई gap down खुल जाता है Monday को, then you need to wait for everything again, all the setup वो पूरा वापस बनना चाहिए. लेकिन हाँ, probable 012 है. अगर इसका आपको follow through मिलता है, then there's something that you can do about it. ठीक है. तो next stock हमारे पास आता है M&M. ठीक है. So monthly chart it's okay. Weekly chart पे आते हैं. बेड शेडी करके ये में तक आ गया. ठीक है. अब अगर इसमें भी मुझे ट्रेंड लाइन मिलता है तो हम बना लेते हैं. कुछ खास नहीं है ऐसे तो. This something roughly something, so consolidation, मतलब consolidation नहीं बोल सकते इसको, but squeeze हो रहा है ऊपर की ओर. ठीक है. बट मैं इसको हटा देता हूँ. मैं इसको I don't like drawing biasness on my charts. फिर हम डेली चार्ट पे आते हैं. डेली चार्ट में ये हमने लास्ट टाइम बात किया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस था. फिर एक 012 हमने बोला था ये टेस्ट होगा. ये टेस्ट हुआ एंड ये ऊपर जा रहा है. तो टेस्ट अगर मैंने बनाया होगा तो पक्का ये आर्ली चार्ट में बनाया था, है ना, बिकॉज देयर वाज maybe there was dynamic support here somewhere. Again, this is a false breakout for daily chart. So this is what happened because of the CPR. So there is a problem 012 in third, but I think again this is not, there is a result due now kahan pe Friday ko, next Friday. All right, but this is not my favorite setup. I think I'm going to remove it from here. Let's go check out Lalpath Labs. All right, Lalpath Labs monthly bullish divergence started the run, came back to EMA. Now let's see weekly में क्या है. Weekly there was a resistance, ऊपर गया, this few divergences, negative divergence, and नीचे आ गया. I think I can draw like a corrective wave here also. Let's just see. तो monthly में बढ़ था, weekly में ऐसा setup बनाया, नीचे आ रहा है. Let's go to the daily chart. डेली चार्ट को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, एज ले लेंगे. हाँ, करेक्टिव वेव एंड अ बुलिश डाइवर्जेंस. ठीक है. सो व्हाट वी हैव हियर इज अ करेक्टिव वेव क्लियरली, एंड देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर व्हिच वेंट अप. अब आप खाली इसमें
I think this probably the best thing to do is draw this. It is at 61.8. या तो आपको एक bullish candle चाहिए Monday को, and then you can create it as a 012 and all that. एक बार hourly chart देख लेते हैं. Bearish divergence at the end, coming back. So either it comes here, creates a bullish divergence, something, and then happens. Otherwise, you just wait for it. अगर entry तब तक नहीं लेंगे जब तक ये 012 होके एक bullish candle देके नहीं भागता है. ठीक है? Otherwise, there's no entry. So Lalpath Labs, just because monthly में एक सुंदर सा bullish divergence है, there could be a setup here. Okay, let me just see if I can, So this is the only worry that I have. So it should go back inside the trend line. ये जो बाहर निकल गया है, ये वापस अंदर चला जाए. Let's just check the weekly chart again with the trend line. है ना, बाहर इतने जोरों से भी नहीं आया है. अगर मैं ऐसे देखूं, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, तो अगेन जैसे मैंने बोला, इसको ऊपर खुलना जरूरी है. अगर ये लो टूट जाता है और चैनल के नीचे निकल जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो इट्स लाइक अ ब्रेकआउट टेस्ट एंड फॉलो एंड ऑल दैट. बट yeah, you can keep an eye on it. Okay, it's not too bad. फिर हम आते हैं नौकरी में. Let's start from the monthly chart once again. Monthly started with a bullish divergence. यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉटम करके ऊपर गया, tested the neckline EMA, and then it's going back up again. Monthly chart is not nothing to worry about. Weekly chart में हम आते हैं. Weekly chart इसलिए ये यहाँ पे है because if you see this, let me just draw this properly. I think this is मैं ऊपर का लाइन को नीचे लाना चाहता हूँ टच पॉइंट्स लेने के लिए. Maybe this becomes too big a zone. Yeah, okay, so this is probably one touch point, two touch point, fall, goes up, breaks out and comes back, and engulfing bull this week. Okay, so CIP engulfing bull this week. This seems like a very good setup. Okay, अब इसको मैं डेली चार्ट में देखता हूँ. तो डेली चार्ट में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे you can see there is a pullback, a setup, and is going up. Now, of course, you want to follow through, you want to plot your CPRs. अगर मैं अर्ली चार्ट में जाऊंगा, maybe और माइक्रो एनालिसिस हो पाएगा. और डबल बॉटम था, ये देखो बहुत ही सुंदर चीज है यहाँ पे. ये this is your neckline of double bottom, which is also a gap. You see this gap down, tested and going up. So yeah, if it again कोई gap up होता है and all, you can use this. I don't know if I have CPR here, if I can plot. So monthly narrow CPR also. I think this is a monthly CPR, narrow CPR. So yeah, everything looks good, right? Everything looks good. So आप इसको plot करके test कर सकते हो. So नौकरी, again, one stock that you can keep an eye out for as well. Of course, this all depends on momentum. Momentum मतलब क्या आपको follow through मिलता है. All right, now this in turn, let me start with the monthly chart again. Lotus Labs. So Lotus Labs, if you can see, it fell, now corrected till the EMAs. So पहला ये EMA था, फिर ये EMA आया. EMA पे last month we've got an engulfing bear also, right? Now let's go slow. Let me delete these lines. Let's concentrate. Okay, so पहले बार यहाँ पे आया था. Okay, so I'll be looking at it in the weekly chart also. That is why I'm marking it like this. Let's go to the weekly chart. All right, maybe it's not visible here. So you've got a support line breakout, came back here. There was a series of negative divergences, came back here, and now there's again a negative divergence here. हमने डिस्कस भी किया था Lotus Labs लास्ट टाइम भी, कुछ हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि टिक डाउन हुआ, उसका लो टूट गया, सो सेलिंग अपॉर्चुनिटी. नाउ ये जो सेल हुआ था, एक अच्छा चेंज इन पोलैरिटी बोल लो या अच्छा रेजिस्टेंस से सेल हुआ था, which was a very good opportunity. Now when we come to the daily chart, of course at the time everyone was worried कि अरे इसको हम सेल कर पाएंगे ऐसे मार्केट में कि नहीं. So let me just remove these circles. All right, so now if you see this, यहाँ से गिरा, there was a gap down here. Gap down होके follow through नहीं हुआ था, ये वापस गया है अपने गैप को टेस्ट करने के लिए. Now let me come to the hourly chart here. Hourly chart में very shady divergence, not really a divergence. Let's open the CPR. है ना, not तो CPR के नीचे अगर बंद होता है, I think it's safe to say, या डेली में अगर रिजेक्शन कंफर्मेशन हो जाता है, तो it is safe to say that we can use that to enter a short sell trade first, so that this gap is considered tested and trade till here. तो इसके लिए क्या होगा, अभी spinning top बना हुआ है, which is a confusion candle. You want Monday to give you a confirmation, close below this, and then you trade Tuesday onwards.
अगर ये एग्जॉस्ट हो जाता है then of course you things change and you know gap exhaustion क्या होता है, gap exhaust हो गया तो then we look for a move on the upside. But yeah, I mean considering there were poor results apparently and there's a gap down, this gap test is something that we look out for. Okay, it's a decent pullback to the gap. Okay, so this one here is probably a trade that you'd like to sell. फिर हम आते हैं मुथूट फाइनेंस पे. ओके, अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंथली चार्ट. मंथली इज ऑलराइट. बुलिश डाइवर्जेंस से स्टार्ट हुआ था, नॉट द बेस्ट डाइवर्जेंस बट यस श्योर. ऊपर ईएमए, ऊपर ईएमए, ऊपर ऑफ कोर्स नियर द ऑल टाइम हाइज. वीकली चार्ट में there was series of negative divergences. ईएमए तक आ गया है. If you see this gap was exhausted, it came back till that level almost, and you can see there's a hammer last week, high not broken, and again almost like a doji candle with high not broken. Of course next week अगर high break होता है तब. डेली में हमारे पास वीकली एट ईएमए डेली बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, and at a decent level. So if even if I forget about the gap there, you see there's a beautiful setup here, है ना. So that was a resistance या head and shoulder बोलो, breakout हुआ, नीचे आया, change in polarity, bullish harami, not confirmed. Again you've got a bullish harami and a doji in the daily chart with a bullish divergence also. So a confirmation on the upside could be something that you're looking forward to for this stock. In the hourly chart, yes, same situation. Let's see where the CPR is. A little far away, but yes, you do have a setup, so why not? Okay, so this again, Muthoot Finance looks okay. All right, looks okay. Then we have PI Industries. Okay, I'm not sure why PEL is not here. Is it not in the futures or something? But anyway, so PI Industry, let's start from monthly chart. Monthly looks all right. ठीक है, हाई बनाता है, ये में तक आता है, हाई बनाता है, ये में तक आता है, हाई बनाता है, ये में तक आता है, ये में तक आता है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे. वीकली चार्ट में जाते हैं. वीकली में once again you could probably draw this if you want. So it looks like a breakout test and all that. But इसके अलावा if you notice there's a bullish divergence here. ठीक है, there's a bullish divergence, a decent candle also this week at, as I said, monthly EMA. ठीक है, monthly EMA पे. अब आते हैं डेली चार्ट पे. Remember weekly has a bullish divergence. डेली में भी एक shady divergence है तो सही. Results हैं इसके again next Friday. So be careful of that. And if you want, you can draw your support resistance lines also. So यहाँ पे divergence था, ऊपर बढ़ गया. यहाँ पे again there's a divergence, there's a weekly divergence. So have a look at it कि क्या है. ठीक है. So ये हमारे पास stocks था. Let me just check PEL. PEL, okay, it doesn't have futures, so it's in my green list. All right. Okay, so these are the stocks that you want to check if you want to trade futures on the next week. And अगर इसमें कुछ setups हैं. अब हम आते हैं हमारे पास जो ग्रीन लिस्ट पे है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात करते हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्क्वीज दिस आउट. इसको मंथली पे ले आते हैं. ठीक है, एंड सो आई गॉट मंथली, वीकली, डेली चार्ट्स हियर. लेट्स स्टार्ट. तो पहला स्टॉक हमारे पास है मुंजल शोवा. ओके, मुंजल शोवा का मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि सेटअप्स कैसे बन रहे हैं और हम कब कब डिस्कस कर रहे हैं. ऐसे तो बहुत सेटअप्स है जो हमने डिस्कस किया और क्या क्या हो गया. गुजरात गैस हुए, there's Glenmark, this tons and tons of setups that has worked. But you need to understand कि ये बन कैसे रहे, हो कैसे रहे. So monthly chart में we've always spoken about this breakout here. So weekly में जाते हैं because this week we spoke about this last week also. So यहाँ breakout हुआ था, हमने बोला था ये pullback होगा, अगर CIP होगा तो बहुत अच्छा होगा. That's a decent setup, and see what happened after the breakout. Now we come to the daily chart. Now daily chart, this was it. We were somewhere here after the breakout. This is Monday, so this was a Friday engulfing bear, and we said it's going to test this line, which it did on a Wednesday, and then engulfing bull बना के it went up. ठीक है, so that was Munjal Showa. I think कोई भी retreat अगर करता है prices and you get an opportunity, one can re-enter similar to other stocks also. All right, so let me just go back and zoom this out and make it a monthly chart. Then we come to Gujarat Gas. Again, Gujarat Gas, हमने last time monthly chart of course started with a bullish divergence. Fantastic move. Coming to the weekly chart, I'm just going to make it bigger.
हमने एक लाइन बनाया था यहाँ पे ऐसे करके, जिसको एक बिग व्हाइट कैंडल ने तोड़ा। अब जाके मैंने इसको हटा दिया बिकॉज इट्स नॉट वैलिड एनी मोर, एंड यू कैन सी देयर इज अ मच बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नाउ। अ हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, वी नीड टू सी। ऑफ कोर्स इट लुक्स, देखने से सब कुछ अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट सही लग रहा है। जब हम डेली चार्ट पे आते हैं तो PEL is in futures, all right. So I'm just going to discuss PEL also. यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा तो we can talk about it as well. तो जब हम डेली चार्ट पे आते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली में भी रेजिस्टेंस में टूट चुका है। यू कैन सी देयर इज अ ब्रेकआउट, बट इट्स नॉट बाय अ बिग व्हाइट कैंडल और समथिंग, यू नो, इट्स स्टिल देयर। 13th Feb को रिजल्ट है, plenty of time left. So if I just refine this line, this is already refined pretty much. So अगर आपको यहाँ पे भी ना, if you get like a change in polarity and then goes up, like just a test नीचे and then goes up, then this is something that you can re-enter at, you know, EMAs in the daily chart. However, if there's a gap up and you know there's a continuation, weekly chart में ऐसा लगता है कि you know it's almost, it has broken out. अगर ये ऊपर की ओर continue करता है momentum, then this low, weekly low, could be probably be like a stop loss for you, I think, है ना? So Gujarat Gas also is something that you can keep in your watch list, and इस पे री एंट्री करना है, या इस पे अगर आपने बुक कर लिया तो री एंटर करना है, या आपको मोमेंट उप्स सॉरी, आपको इसका मोमेंटम का ट्रेडिंग करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माय सेंसेस देयर। देन वी हैव meanwhile, when I'm doing this, you can put your stocks you want me to look at in the chat box, please. Then we have Rain Industries. So start with monthly chart once again. Monthly chart में, as you can see, there was a bullish divergence. ये हमने discuss किया था once again. First December वाला, ये December वाला month में pick up हुआ था, January में entry था, and then now February में, if I go to the weekly chart, you can see there's a nice breakout here. Now, of course, it needs to be a nice breakout and needs to continue the momentum. So अगर हम daily chart में जाते हैं, इसको बस check करने के लिए, let's see if the line is here also. नहीं बनाया हुआ है, so let me just make it visible here. You know, so daily chart में you can see there's a breakout and there's a test also. So you need like a gap up or something. अब आप जाके, you know, maybe you draw your like horizontal lines here and see, you know, if this breaks out and I can, you know, enter this. So Rain Industries में भी ऐसा कुछ बना हुआ है, and you can keep an eye out for it. Better entry मिलता है या कोई divergence entry मिलता है छोटे time frame में, you could probably take it. ठीक है? Alright, so that is Rain Industries. अब next stock देखते हैं. Next हमारे पास है Orient Electric. Orient Electric, again, we need to check the fundamentals, but you know, up, EMA, up, fell, EMA, fell, EMA. There's a bullish divergence, series of bullish divergences confirm हुआ था December month में. January में momentum ने साथ नहीं दिया, and अभी तो February चल रहा है, तो this is a fairly new month. This month needs to just keep it in your watch list. ये महीना excuse me, अगर अच्छा कैंडल बनता है, then there is something that you can look for in future. ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है, आप खाली इसको, you know, just have these zones drawn कि भाई ये मेरे zones हैं, इसको तोड़ना जरूरी है। तो पहला जोन टूटेगा तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब सारे zones तोड़ने शुरू करेगा। ठीक है, सो ओरिएंट इलेक्ट्रिक इज समथिंग दैट यू कैन कीप एन आई आउट फॉर, या इसका एक अलर्ट लगा के आप छोड़ दो। फिर हम आते हैं PEL पे। ओके, सो PEL आई केप्ट इट इन द ग्रीन लिस्ट, बट ऑफ कोर्स यू कैन ट्रेड दिस एज वेल, व्हिच इज ब्यूटीफुल, बिकॉज अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, इट स्टार्टेड हियर विद अ वेरी शेडी स्मॉल डाइवर्जेंस, ऊपर बढ़ा, अब ये EMA पहली बार आया है। EMA पे आके आप देख रहे हो डोजी है, अगेन डोजी है, एंड दिस, बट कोई भी हाई, मंथ का हाई टूटा नहीं है। सो इफ यू सी सिंस सितंबर लोअर हाइज बना रहा है, सो हाई टूटना जरूरी है फॉर द मोमेंटम टू किक इन, and for that you can see in our weekly chart we have a bullish divergence here. ठीक है, in the MACD chart 50% ऊपर खुला था, which is gap up, and of course did very well. So अगर आप यहाँ पे देखो, let me just remove this line, I can show it to you in the smaller chart, let me just make it bigger. ठीक है, तो अगर हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं,
daily chart mein there is this gap, this huge gap which is acting as a support. All right, and of course where is the weekly gap? Just a sec. I think this is Tuesday, Monday. It's closed here, opened here. Okay, fair enough. And this looks pretty good, right? This looks pretty good in terms of the setup. There's a weekly bullish divergence at a decent level. Let me zoom out. I think we can find like a, you know, a horizontal, beautiful, right? Resistance, broken by a gap, came back, support, divergence, came back again, divergence. वीकली में है and you're looking to take a position on the upside. Now इसका hourly chart में अगर खोलते हैं, I think I spotted a head and shoulder. Let's just check. Yes. So if you see there's a head and shoulder here. Okay. So again, you need a gap up or something, and of course the help of the momentum in the stock market, that also you need. अगर ये ऊपर की ओर चलता है, then this is a decent setup to get into this particular stock. Okay, especially in the weekly chart, looks like a decent setup, a weekly divergence, which is, all of you know, pretty decent. फिर हम आते हैं IDFC First Bank पे. Again, let's start with the monthly chart. Monthly EMA पे आ रहा है, and this is your previous rejection. Okay, previous resistance. So ऊपर गया, नीचे आ रहा है. ये मैंने actually रखा था probable, यहाँ पे uptick सुबह हो रहा था, लेकिन I think it failed. But I think I'm going to keep it in my watch list just to see what's going to happen, because this is a bullish harami candle, but it's not the best with a wick on the up. So daily chart में एक बार जाते हैं. I think daily में, हाँ, so maybe it comes back. daily में divergence बनाएगा, weekly में uptick होगा and all that. So इसको अभी के लिए तो हटा देते हैं. Let me just put it in section 3. Right. So we've got Munjal Showa, Gujarat Gas, Rain, Oriental Electric, PEL, and then we've got Vinati Organics, sorry. सो मंथली चार्ट में आप देख सकते हो, मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस चल रहा है, लेकिन इसका हाई नहीं टूट रहा है. सो फॉर एग्जांपल दिसंबर में टिकअप हुआ, सो जनवरी का उसका हाई टूटना चाहिए था, नहीं टूटा, एंड देन अभी फरवरी चल रहा है. सो यू कुड इजीली लाइक सेट एन अलर्ट हियर आल्सो, मे बी ऐड अलर्ट ट्रेंड क्रॉसिंग अप ओनली वंस, embarked confirmed, create. All right, so there you go, and we can go to the weekly chart. Weekly chart में भी bullish divergence है. You can see this beautiful setup because there's a nice support line here as well. है ना, support line पे. Now of course I think it's a very shady daily chart, तो daily में जाके फायदा नहीं है, but still there's a bullish divergence here. Not the best candle, so it needs high तो टूटना ही है in any way. So this needs to break, and then you're confident that something's going to happen here. I think there's no point in going to the daily chart because it's very shady, the price movement. But it is. So अगर मैं इसको ऐसे भी रख दूं, this is the high, right? So this is a rectangle, and there will be a rectangle breakout. So it will be like a rectangular base here, which is being formed, which is also pretty good. So इसको आप again अपने लिस्ट में रख सकते हो. फिर हम आते हैं Ester Industries. Once again, bullish divergence से start हुआ है monthly chart में, confirmed भी है, good place to be at. So breakout, and फिर come and test it. Weekly chart में there is a bullish divergence here in the weekly chart also at EMA है, and I think again daily might not be as pleasant. Yeah, it's not that pretty, but sure, still on the upside, you know, up, correction, up, correction, up. All right, again इसका भी result due है, so stay away. Tuesday 13 Feb, तो ध्यान से, मतलब near to that, be cautious. But once again, monthly में bullish divergence है, something that has not started the move yet, maybe something that would eventually. Then we have Ramco Systems. Okay, Ramco Systems again monthly में bullish divergence था, started, came to EMA. I put this here because it has not gone up as much as it should have on the basis of a bullish divergence, right? So इसीलिए मैंने इस लिस्ट में रखा है कि भाई देख के रखो, because यहाँ पे एक resistance भी है. If there's a breakout, why not? Okay, in the weekly chart. और फिर daily chart में भी अगर आप देखोगे तो you know, you can probably refine this line properly, अच्छे से बना लो, and you can see that this, you know, it might just turn around. Okay, so these are few stocks. Of course there are many other stocks, but I think today this is what I wanted to discuss with you, that there are few stocks that you would like to keep an eye on for this coming year before the elections. And of course
I mean, whatever the interim budget was, it was not really impactful or anything that we have to worry about or really care about. Okay, so these are all about stocks. Now, of course, keep putting in your stocks, and meanwhile, I'm going to talk about Nifty and Bank Nifty. Okay, very very important. इसका analysis करना हमको बहुत जरूरी है. So Nifty, as you remember, I think I've spoken about this a lot of times, that there was a gap down here, and जब ये gap down नीचे हुआ था, this was a Wednesday, I remember the fall, and फिर dramatic fall, piercing pattern, came back up, and we were always wondering that it's going to come back to test this gap. Okay, so that is what happened today. Yesterday test हो गया था, अगर आज नीचे खुलता then selling शुरू हो जाता, लेकिन आज gap up खुल के ऊपर के तरफ test किया. Previous high, which is also a psychological level here, it came till there, tested and fell throughout the day. So if I start this analysis with a monthly chart, last month was a doji, but again, जो मैंने पहले बोला, इतना खराब नहीं है. फिर हम आते हैं weekly chart पे. Weekly chart में so this was the previous high, this made a new high today, and of course the RSI, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पहले prices यहाँ गए थे तो RSI was above 70, this time it is not. So इसका मतलब है कि weakness is there. Okay, momentum उधर चला गया था, maybe उतना strong नहीं था. फिर हम daily chart में आते हैं, same situation here as well. Like look where RSI was earlier, it is a relative strength index, it tells you the strength of a trend, right? And next time when it made a new high, look where RSI is right now. So there's something that is weird. So अगर ये psychological लेवल है और खाली इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, देन इसका मतलब कि मंडे या ट्यूसडे इसका फॉलो थ्रू नहीं होगा, इसका मतलब इसका लो नहीं टूटेगा, एंड देयर विल बी अगेन अ गैप अप एंड द प्राइसेस विल मूव हायर. लेकिन अगर ये टेक्निकल सेटअप है व्हिच इज बेसिकली अ डबल टॉप एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू फॉल, इफ ओनली इफ, एंड इफ द लो ब्रेक्स, देन यू माइट लुक टू सेल निफ्टी. ओके, अभी करेंगे कैसे? अगर ये आवली चार्ट आप देख सकते हो, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. देयर वाज अ गैप हियर, ये गैप टेस्ट मतलब हाई टेस्ट होके ये गैप पे आके रुक गया है. आज का गैप एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. ओके, सो लेट मी रिमूव द ओल्ड गैप्स. आज का गैप अब एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. सो दो चीज हो सकता है, या तो ये वापस ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा हमें इंपॉर्टेंट रहता है. सो अगर ये गैप अप खुलता है, यहाँ पे कुछ करता है एंड देन फॉल होता है, मतलब बेड बना के ट्यूसडे से फॉल होता है, देन समथिंग दैट यू वांट टू टेक केयर ऑफ. Otherwise, just plot your CPR, which is the monthly CPR that I always speak about. Let's get my monthly CPR out. Yes. So is that my monthly CPR? Yes. तो अगर ये monthly CPR आप लगाते हो, तो ये monthly CPR के ऊपर आज गया था. I think yesterday was the first day. और यहाँ पे R1 है इसका, ठीक है, R1 तक ही गया है. So let me, am I on the wrong? I think I'm on the wrong chart. Just a sec. Yes. ठीक है, इफ यू सी हियर मंथली सीपीआर के R1 तक आ गए ऑलमोस्ट. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि टू क्रिएट दैट डाइवर्जेंस दैट वी ऑलवेज लव इन द अर्ली चार्ट, ये ऊपर जाए R1 तक, डाइवर्जेंस बनाए एंड फिर कुछ करे, तो उसके लिए भी हम खाली है. लेकिन जब तक मंथली सीपीआर के ऊपर है, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने जो क्लास लिया था बैंक निफ्टी का, देयर इज ओनली वन पोजीशन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू टेक. ओके, इफ द गैप इज एग्जॉस्टेड, गोज बिलो दिस, देन अगर ये गिरना शुरू करेगा तो बहुत जोरों से गिरेगा, मेरा ये मतलब है. ठीक है, अगर मैं इसका सीपीआर हटा देता हूं आर्ली चार्ट में, ठीक है, हो सकता है कि ये डाइवर्जेंस बनाना है 0 1 2 3, यहाँ डाइवर्जेंस बना के एंड देन गिरे. हो सकता है, अगर वो हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है कि R1 पे मिलेगा हमें एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. बट ये एक जोन है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है. अभी ये तोड़ने पे अगर सीआईपी होता है, एंट्री, ऑल दैट इज फाइन, फेयर इनफ. अगर गैप अप खुलता है मंडे को, फेयर इनफ. बट टिल दैट हैपेंस, let's not jump into conclusions. Okay, so let's be very very careful about what we are doing. राइट, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं. बैंक निफ्टी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बार बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी इतना खराब नहीं है जितना बैंक निफ्टी देख के लगता है. सो मंथली चार्ट से शुरू करते हैं. मंथली चार्ट में यू कैन सी, ऑलराइट, दिस लाइक एन एरो साइन, राइट, कंसोलिडेटिंग. सो पहला बड़ा मूव, छोटा करेक्शन, मूव, छोटा करेक्शन, फिर मूव, फिर छोटा करेक्शन, फिर छोटा मूव, छोटा करेक्शन. अब या तो ये टूट जाएगा नीचे की ओर,
there's a dark cloud cover here, जो कि इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट लास्ट 31 जनवरी को जो पुल बैक हो गया था ना, इसके कारण ये कैंडल फिर भी थोड़ा सा सुधर गया. अदरवाइज बाय द एंड ऑफ लाइक 30 जनवरी के एंड में मुझे लग रहा था एक तो गया. ठीक है. So monthly candle is not the best. There is a series of bearish divergence. यहाँ से यहाँ. There is a lot of bearish divergence. और last time जब हुआ था ना, कोविड के टाइम हुआ था, यहाँ पे एक bearish divergence हो गिरा था, यहाँ पे हुआ था, ये EMA तक आया था, यहाँ पे you know what I'm not trying to scare you कि क्या हो जाएगा, but what I'm saying is कि if there is a confirmation, this is where the wind is. फिर हम वीकली चार्ट खोलते हैं. वीकली चार्ट में भी आपको ये दोनों वेज बहुत सुंदर से दिख रहा होगा. इट्स ब्यूटीफुल. हमने बात किया था लास्ट, इस वीक गैप अप खुल गया तो हम बच जाएंगे, टूटेगा नहीं, ये खुला. लेकिन इस वीक शूटिंग, मतलब इट्स नॉट द बेस्ट कैंडल, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट द वर्स्ट. इट्स स्टिल बुलिश हरामी. खाली प्रॉब्लम क्या है, इसका एक विक जो ऊपर की ओर है, ठीक है, लाइक अ शूटिंग स्टार. बट अगेन वीकली और मंथली चार्ट देख के हमें एक अंदाजा ये तो लग रहा है कि वीकनेस है, लेकिन हम वीकली और मंथली के हिसाब से ट्रेड नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स बैंक निफ्टी, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी if we trade on that bigger time frame. So हम डेली चार्ट पे आते हैं. डेली चार्ट में if you can see, this was the resistance. It went up, came back down, gave you another trade here, came back. अब आज सुबह तो लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा था, तो मुझे ये यूजलेस हो जाएगा, doesn't matter. But right now you have at EMA engulfing bear and a bearish divergence in the hourly chart. Okay, let's open the hourly chart quickly. ये जो ब्लू है वो ऑफ कोर्स मंथली सीपीआर है, सो वील डिस्कस इट व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द आवर्ली चार्ट. अगर आप आवरली का रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस बना, गैप डाउन से ब्रेक हुआ था और फिर यहाँ पे पहली बार आया वापस आपको ट्रेड देने के लिए. ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस से सेंसर्ड है, तो इसका मतलब पुल बैक हो सकता है. जैसे मैंने निफ्टी का बोला, एक हो सकता है पुल बैक बन के वो रेजिस्टेंस पे कुछ बनाए एंड देन आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे. I know I'm being a pessimist in terms of this, but it is because two reasons. Bank Nifty first, narrow monthly CPR के ऊपर जाके R1 यहाँ पे है, उसके ऊपर जाके गैप एग्जॉस्ट किया आज का एंड CPR के नीचे बंद हो गया, which is not the best thing. Okay, I hope all of you understand this कि ये बेस्ट थिंग नहीं है. अब इसका ट्रेड आज हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फॉलो थ्रू 15 मिनट का कैंडल था लास्ट का, वो इट इजंट वैलिड. सेकंड, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा अगर ये ऊपर की ओर ऐसे जाके ऐसे गिरता है, ठीक है. सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी हियर समवेयर, जो हो सकता है यहां तक आ जाए पुल बैक के लिए 012 बनाने के लिए, आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दैट वुड बी बेस्ट फॉर अस. ओके, अगर गैप डाउन खुलता है ऑफ कोर्स वी आर गोना रिजॉर्ट टू शॉर्ट सेल positions. Once again, अगर मैं यहाँ पे भी अगर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, so it's something like this. All right, so it's not exactly parallel, but something like this. Okay, this would be not the prettiest, but yes. All right, अब आते हैं कि जो हमने बात किया था बैंक निफ्टी के सेशन में कि क्या हम सेटअप्स यूज करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, उसके अगर हम बात करते हैं तो वो let me open that template, just a second. वो ये था. So anyone who's using a 15-minute chart and an hourly chart, and जैसे especially people, this is for my tribe of course, जिसके सामने हमने ये डिस्कशन किया था, है ना. तो मैंने भी सुबह यहाँ पे पोजीशन लिया था. of course it is very weird because ग्रीन लाइन के ऊपर था, तो मैंने सोचा ग्रीन लाइन का स्टॉप लॉस दूंगा and all that, but जब ये गिरने लगा था यहाँ पे एक डेली R1 था और यहीं पे कहीं पे मैं निकल गया. मैं बोला नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि कल हमें नया CPR मिलेगा. अब नया CPR क्या है आप ये देखो, दिस इज योर फ्यूचर नैरो वीकली CPR. इसके नीचे ऑलरेडी है, तो मैंने जैसे बोला ना, ये अगर पुल बैक करके अगर नीचे जाता है देन दिस इज समथिंग दैट यू नो माइट हेल्प यू टू एंटर अ ट्रेड ऑन मंडे और ट्यूसडे, आई डोंट नो, यू नो. बट अगेन मोमेंटम चाहिए. मोमेंटम अगर नहीं होगा देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो इट कैन कम एंड करेक्ट दिस लेवल अगेन एंड देन गिव यू अ ट्रेड. वो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, लेकिन मंथली CPR के नीचे देन इसीलिए हम इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ही ट्रेड ढूंढेंगे टिल इट गोज बैक अप अगेंस्ट अगेन बैकअप ऑफ द मंथली CPR. ठीक है,
सो ये प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के लिए. निफ्टी अगेन नॉट टू मच बिकॉज आई थिंक इट्स गोना कम बैक गिव यू समथिंग इन, बिकॉज ये बहुत बड़ा गैप है, इसको एग्जॉस्ट करना एक उसी में अपने में ही एक सिचुएशन हो जाएगा. एंड इसको एग्जॉस्ट करके फिर पुल बैक होगा, ये भी हो सकता है, बिकॉज देन 012 विल बी अ लोअर लेवल. But again, I'm trying not to predict here, but you can see where my concern is, क्योंकि ये monthly narrow CPR के नीचे है, weekly CPR भी narrow रहेगा, so I'm not very. So just a second, this is I think let's just make it weekly quickly. You can see right, this is your weekly CPR यहाँ पे. So I think opportunity मिलेगा बैंक निफ्टी में, है ना. और डेली में engulfing bear भी बना हुआ है at EMA, so this is fall at EMA and maybe another fall. S1 है गैप पे, मे बी S1 तक तो आ ही सकता है ना. सो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी है. अब ऑफ कोर्स इससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं बात करें तो बेटर रहेगा. अब हम आते हैं आपके स्टॉक्स पे कि व्हाट स्टॉक्स यू वांट मी टू लुक एट. सो लेट्स ओपन द वीकली चार्ट हियर. ठीक है, पीएल का बात हमने कर लिया. ऑफ कोर्स ABFRL आई थिंक डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट डाइवर्जेंस. So and we did not get an entry also. I think weekly में divergences थे. डाउनटिक यहाँ पे हुआ, इसका रिजल्ट अभी भी ड्यू है क्लियरली. अभी भी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है, लेकिन या एज आई सेड यू नो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, इट्स नॉट अ जैसे ये जाता है ना ठक 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 ठक, ये ऐसा मूव नहीं लग रहा है. स्पेशली ये जो विक्स ऊपर की ओर बन रहे हैं इस लेवल पे. सो अगेन डाइवर्जेंस काम नहीं किया. आई थिंक देयर वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर, अभी तक काम नहीं किया है. सो इफ इट ब्रेक्स आउट देन विल प्लान समथिंग एल्स, लेकिन अभी के और तो कुछ नहीं है. आई थिंक आई वुडंट बाय इट हियर because of this particular. So let me open this chart, let me redraw this. हाँ ये ठीक है, horizontal line. Let me draw a daily chart खोलते हैं. Yeah, you see this is an important level. I think you can थोड़ा सा इसको अच्छा से भी बनाना है, more touch point, then you can get it here, है ना. तो ये जब हुआ था आई थिंक यहाँ पे वापस भाग गया, एंड ये वापस जो जा रहा है आई थिंक इट्स जस्ट रिजल्ट्स भी हैं. आई थिंक बुरे बुरे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं पास्ट में भी. तो आई डोंट नो, आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस स्टॉक इफ यू आस्क मी, टू बी ऑनेस्ट, नॉट द बेस्ट. ठीक है, दिस इज माई, आई मीन इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ इसके बारे में. जुबिलेंट फार्मा, this is in our green list I think, right? Pharma or Pharmo, sorry, this I think I've opened Jubilant Pharma, yes, Pharma. So monthly chart, of course we had a bullish divergence here. Okay, bullish divergence 012. So let's get our Fibonacci out. So this should be the target. अभी भी थोड़ा सा है जगह टारगेट के लिए. एंड डेली चार्ट लुक्स ओके, रिजल्ट है इसका आज था, सो जो भी आया होगा आई एम नॉट श्योर, है ना, लेकिन ठीक ही लग रहा है यार. दिस इज डिसेंट इफ यू आर स्टिल इन इट, है ना. बुलिश डाइवर्जेंस पे निकला था 012, एंड मंथली चार्ट भी आप देखो, सीलिंग अभी बहुत दूर है. सो लुक्स ओके. एंड कहाँ बना था ये जरूरी है ना, जैसे मैं बार बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बन कहाँ रहा है, ये देखो आप, लेवल दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू. So looks good here. Jubilant Pharma, NBCC, इसका भी तो हो गया. हाँ, so started with triple bullish divergence. You can see here एक RSI भी टेस्ट हो गया था ये वाला, यहाँ पे triple bullish divergence test 012, and this is doing fantastic. I mean some of these stocks I hold NMDC, so you know I mean I've seen these things move. It's crazy. क्या कर सकते हैं, मतलब there's nothing to do. Wherever it's enough for you, or maybe wherever these things stop fundamentally खराब होना लगेंगे तब. But I think I know it's too low here, but I think this should never break. Like let me just draw this. Maybe मतलब लाइफ में अब अगर आया कभी, तो अगर ये टेस्ट होगा तो यहाँ पे एंट्री ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन it's too far. I'm just saying कि ये अब आपका लेवल बन जाता है, you know, एक बेस बन जाता है. So I'm not saying आएगा, so don't get me wrong there. बट ये है कोटक बैंक, आई एम गेसिंग.
कोटक बैंक इज साइडवेज यार, आई थिंक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इतना वीक है ना, सो इसको भी चलो देखते हैं। यहाँ पे दिस इज डेली खुल गया क्या, इसको वीकली खोलते हैं एक बार, है ना। सो दिस इज लाइक अ सपोर्ट लेवल हियर, बट एंड देयर वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर, सो ऊपर गया, अभी ये में तक आ गया है, बट डेली में शेडी डाइवर्जेंस है। यस, तो आई थिंक हेड एंड शोल्डर का टारगेट हो गया है ना, हेड एंड शोल्डर का टारगेट हो गया। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, ऊपर गया, या मे बी यू नो इफ बैंक निफ्टी इसका साथ देगा, जैसे मैंने आपको बोला है मेरा बैंक निफ्टी का जो ओपिनियन है वो जो है वो है, तो अगर उसका साथ देगा तो मे बी इट विल गो अप, है ना। वीकली कैंडल लुक्स ऑल राइट, एवरीथिंग लुक्स ऑल राइट, डाइवर्जेंस था, बट आई बी लिटिल केयरफुल। ठीक है, सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट पे तो हो, अगर आप कैश स्टॉक्स की बात करो, ट्रेडिंग की बात करो, आई थिंक आई विल स्टे अवे फ्रॉम दिस, ऐसा कोई बहुत सुंदर सेटअप नहीं है इस पे। ठीक है, कोटक हो गया, टाटा स्टील एंड CUB, लेट्स क्विकली डू दिस। टाटा स्टील मंथली ऑफ कोर्स लुक्स ऑल राइट, ऊपर चला गया था, अब एक हाँ रेजिस्टेंस पे आ गया ना, तो इसको ब्रेकआउट करना, आई डोंट नो इफ इट इज दैट इजी नाउ ब्रेकआउट करना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज ओके, यू नो एज आई सेड। यहाँ पे एक बुलिश डायवर्जेंस 012 भी बना था इन द डेली चार्ट, so it's good, like I'll be optimistic on this stock, but see where we are right now. So क्या मैं इसको ब्रेकआउट, क्या मैं उसको खरीदूंगा जो ब्रेकआउट करने वाला है या करने का उम्मीद रखता है, या उसको करूंगा जो करेक्टिव हो गया है, अब मुझे एंट्री दे रहा है ना। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है। CUB, आई थिंक मंथली में तो अब ऐसा कुछ नहीं है, कैंडल्स आर नॉट बैड, गुड वाला बात नहीं है। वीकली इट्स स्टिल एट EMA, आई विल कंसीडर दिस एट EMA ओनली, इट स्टार्टेड विद अ बुलिश डाइवर्जेंस, वेंट अप, it's still at EMA, but daily when you need a bullish divergence here, result it shows green here, so I'm not sure, but yes, अगर मंडे अच्छा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये कब था, थर्सडे, सो आज तो आ जाना चाहिए था उसका इफेक्ट, ये नेगेटिव इफेक्ट आया, so let's say मंडे को ये बुलिश डाइवर्जेंस बनता है, and then it starts going up, so wait for 1 week, I think wait for 1 week, अगर वो सब, मैं बोल रहा हूँ अगर सब चीज अगर वो होता है, only then आई मीन एज अ बायर, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो वी माइट कीप इट इन द वॉच लिस्ट कि ये अगर अच्छा एक रिजेक्शन आया मंडे को या कुछ, देन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वी आर इन। ओके, बट अगेन इसका कैंडल देख के लगता है वो ये बैंक निफ्टी का भाव में चला जाएगा, सो केयरफुल। UPL, UPL monthly was a bad candle, वीकली में यहाँ डाइवर्जेंस था, EMA तक आ गया, ये प्रीवियस लो टूट गया, यू नीड 1 गुड वीक UPL में, आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ क्योंकि मंथली कैंडल अच्छा नहीं है, सो आपको एक अच्छा पहले तो वीक चाहिए UPL में, when if there is a good week then there will be triple bullish divergence and we can start looking to do something, अभी कुछ नहीं है, डेली में डाइवर्जेंस है जबकि, तो हो सकता है हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक इट्स अ गुड वीक बिकॉज डबल बॉटम है, आई मीन नॉट लिटरली डबल, डायनामिक सपोर्ट तो है ही, एंड देयर इज अ डोजी हियर, रिजल्ट ड्यू आज था, आई डोंट नो क्या हुआ होगा इसका, तो अगर इसका इफेक्ट अच्छा होगा देन यू विल गेट अ गुड वीक हियर, अगर अच्छा नहीं होगा नीचे चला गया देन नथिंग टू डू। सो डेली में डाइवर्जेंस है तो पॉसिबिलिटी है, एंड वीकली में प्रोबेबल है, सो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, MFSL, MFSL एट मंथली EMA, यस, वीकली में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बेरिश डाइवर्जेंस था, सेंसर्ड नीचे आ गया, सपोर्ट पे है, यस, चेंज इन पोलैरिटी टाइप्स, नॉट चेंज इन पोलैरिटी बट सपोर्ट लेवल है ये वाला जोन, डिसेंट कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल, डेली में शेडी डाइवर्जेंस, नॉट द बेस्ट डाइवर्जेंस बट या श्योर। ठीक है, तो मुझे आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये शायद या इस जोन तक कहीं पे आए एंड फिर एक बार नीचे आए to create a weekly bullish divergence, so ऐसे कुछ होगा and फिर नीचे आएगा and then we'll give you a trade on the upside, but that might take like
a month or like this month or maybe few weeks. So वो कैसे होगा ये मुझे लगता है. तो अभी मेरे हिसाब से results are used 6th February, which is this Tuesday. So let's तो रिजल्ट तो आ ही जाने दो, उसके बाद ही करेंगे. कंफ्यूजन कैंडल इसीलिए खड़ा है यहाँ पे, एंड वी डू नीड लाइक सम साइन ऑफ बुलिशनेस, अदरवाइज वी कांट गेट इन हियर. ठीक है, बट है एक जोन वैसा है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ये जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है. MOL, Make Money Organics Limited, I think that is what MOL is. See, I don't have MACD because new stock, but I think this is ये अच्छा ये डाइवर्जेंस वाला सेटअप ही होगा. वीकली में है एंड हाँ है, सो यू कुड प्रॉब्ली डू योर फंडामेंटल्स हियर. आई एम नॉट श्योर कि फंडामेंटल्स क्या होगा, एंड यूज दिस एज अ जोन ऑन अ डेली चार्ट. तो इसका ब्रेकआउट होने पे this might do something. ठीक है, so let me put an alert here. Breakout है ना. सो मंथली देख के लगता है ऐसा वो डाइवर्जेंस वाला सेटअप ही है, बट एकदम लो पे, लोएस्ट प्राइस, लाइफ टाइम लो टाइप्स से बड़ा है. और ये एक डायनामिक रेजिस्टेंस, अगर ये तोड़ता है तो नॉट बैड. आई मीन कंसिडरिंग इसका फंडामेंटल्स ठीक होगा, वो चेक कर लेना, मुझे नहीं पता. ओमेक्स लिमिटेड, यस ऑफ कोर्स, ये हमारी लिस्ट में बहुत महीनों से था. बुलिश डाइवर्जेंस डाटा डाटा. अब ये यहाँ पे आके एक, वी डिस्कस दिस बिफोर आल्सो, देयर इज अ there's a dynamic resistance here, so either it breaks out, possibility है, RSI ऊपर है, वीकली में भी, डेली में भी ठीक है. either it breaks out and then we start getting in, and फिर oops sorry, यहाँ पे बस ध्यान रखना है, यहाँ पे एक गैप डाउन है. ठीक है, बट आई डोंट थिंक अगर ये टूट जाएगा, आई डोंट थिंक दिस गैप विल मैटर, इट विल गो लाइक. ठीक है, इसका एक फंडामेंटल चेक हो जाएगा, चेक होने पे ही करना. ठीक है, देयर इज अ रेजिस्टेंस हियर, आई थिंक that plays a vital role, but yes, there is a setup. Okay, Bajaj Finance making a weekly bullish divergence AV, or are we waiting for confirmation? Bajaj Finance, so Baj Fin, let's see. Oh no, it's too early to say this. Yes, there is a support line, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे. There is a support line, but कैंडल को देखो यार, it is too early to say. अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा गैप अप खुल गया मंडे को और फिर ऊपर जाके creates a good weekly candle, then yes maybe. बट हमने बजाज फाइनेंस का नेगेटिव ही बात किया था लास्ट टाइम, जब हम फाइनेंस और बैंकिंग को लेके थोड़ा सा नेगेटिव थे. यहाँ पे बेरिश डाइवर्ट था विद 0.12 एट अ रेजिस्टेंस. उस पे भी डेली में भी बेरिश डाइवर्ट, सो दिस was expected. I won't say it is creating a bullish divergence or going to, that's a lot of prediction. I don't want to do that, है ना. Maybe next week analysis में अगर हो गया तो then we'll jump in. Polyplex Corp, Polyplex, I think इसका कोई वो है ना चक्कर, फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें, I'm not sure. अपटिक नहीं हुआ इसका वीकली में, एंड मंथली में भी यहाँ पे जनवरी में एक स्पाइक मारा था ना यहाँ पे इधर. बड है, मंथली बड है, इज जस्ट अ मैटर ऑफ द डे व्हेन इट विल स्टार्ट गोइंग हायर. सो अभी एक हफ्ता अच्छा चाहिए पहले वीकली बुलिश डाइवर्जेंस के लिए, जो यहाँ आया था. आई थिंक एक मे बी प्राइसेस इसके ऊपर जब जाए ना तो बढ़िया रहेगा. लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस. इसके ऊपर अगर प्राइसेस एक बार चले जाए ना, ये हमने शायद लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था, मुझे याद है कि अगर इसके ऊपर, बिकॉज सच अ लो प्राइस ना, इट इज प्लेस्ड एट सच अ लो प्राइस दैट आई थिंक एक पॉइंट ऑफ हाई टूटना जरूरी है, तो उसके ऊपर जाने से बढ़िया रहेगा आई थिंक. ठीक है, ऑलराइट गाइस, डन. थैंक यू वेरी मच. I think have a great week, have a safe week, and hopefully we've done this very slow and explain करते हुए. Please type yes if this was a better explanation and हमने इसको justice दिया है, because I thought B stock को explain करने में थोड़ा हम जल्दी कर देते थे, और maybe that explanation doesn't go through, but yeah, I have given it a shot this time to go slower, and so that more people can understand when this goes as a recording as well. ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए भी मदद हो जाएगा. ऑलराइट,
All right, guys, thank you very much. Have a great weekend. Enjoy your weekend, and I'll see you next week again. Till then, take care. Bye bye.